अस्सलाम वालेकुम। we're going to be studying loci today. loci के लिए बहुत ज़रूरी है that we know geometrical constructions first. geometrical constructions basically तीन किस्म की होती हैं. उन तीन geometrical constructions करने के बाद we'll be easily able to do loci. loci की चार सब categories हैं, तो basically you need to learn 7 subtopics in total. तीन geometrical constructions के, चार loci के. First of all, we've got these three geometrical constructions: perpendicular bisector, we've got an angle bisector, and how to construct a polygon. Polygon में triangle भी आता है, quadrilateral भी आता है, pentagon भी आता है. Polygon क्या होता है? Any shape which has three or more sides. So let's start off with the perpendicular bisector. Perpendicular bisector में first and foremost you've been given a line segment. Line segment, for instance, just imagine it to be an 8 centimeter or a 10 centimeter line. How do you bisect it? Bisect means to cut it into two equal parts and make sure that the line that passes not only cut it into two equal parts but perpendicular हो. ये नहीं कि यूं टेढ़ी हो या यहाँ से slant जा रही हो. It should be perpendicular, so it should be making a 90-degree angle over here like this, 90 degree, and plus it should be dividing the the entire line segment into two parts. So how do we do that? Let me get this off first. Okay, how do we do that? We need a compass, and obviously it should have a pencil fit into it. You're going to open the radius of the compass to more than half the length of the line segment. तो क्या ये सही open हुआ है? No, this is not enough. Why? Because we need to draw arcs above and below the line. A few steps in, you'll realize how this is wrong, and it would not help us be able to reach the perpendicular bisector construction. तो आपने इसको हाफ से ज़्यादा खोलना है. तो imagine it is like this, right? Let me fit a pencil into it as well for a more clear demonstration. Here we go. By the way, the pencil should not be this big. When you're constructing it, make sure it's small enough to be easily maneuverable. But here we go. तो आपने इसको खोलना है to a radius of more than half the length of the line segment. अभी half यहाँ पे. By the way, this blue line would not be given. This is what we need to make. Half से ज़्यादा खोलना है. With center at point A, draw an arc above and an arc below. So imagine you got this arc and this arc. Arc क्या होता है? It's part of a circle, by the way. Now you're gonna pick up the compass and with the same setting, do not change the setting at all. You're gonna place it at B. B पे रख के you're going to draw an arc above and below the line. So we've got this arc now and this arc bending towards B. What do we do now? इस point of intersection को और इस point of intersection को, इन दो arcs की point of intersection वो जगह जहाँ पे ये meet कर रहे हैं, you're going to draw a line. Not only would it cut it in half, ये भी 4, अगर ये 8 सेंटीमीटर का था तो ये 4 और 4 सेंटीमीटर का रह गया, प्लस यहाँ पे 90 डिग्री एंगल भी होगा. ठीक है, that's a perpendicular bisector. Let's go to an angle bisector. एंगल बाइसेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है. ऑब्वियसली यू विल बी गिवन एन एंगल. वंस यू हैव एन एंगल, यू ओनली नीड कंपास एंड स्केल फॉर दैट. अगेन आपने यहाँ पे टू रैंडम रेडियस, दिस इज बाय द वे ये सेंटर है, क्योंकि अगर मैं इसको ड्रॉ कर रहा होता कंप्लीट सर्कल को तो इट वुड हैव लुक लाइक दिस. जब उसी सेंटर से एक छोटा सा पीस बनाया जाए सर्कल का, तो दैट्स एन आर्क. तो विद सम रैंडम रेडियस, कोई इसमें स्पेसिफिकेशन नहीं होती कि मोर देन हाफ, हाफ या हाफ से कम, बस बहुत छोटा ना हो बहुत बड़ा ना हो इस आर्क के रेडियस. टू ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस. एंगल ये गिवन है, कौन सा एंगल? बी ए, एंड लेट मी मार्क दैट सी. ठीक है, सो यू बीन गिवन दिस एंगल बी ए सी. अब आपने इसको यूं कट कर लिया, आर्क गुजरी और दो जगह पे उसने कट किया, एक्स और वाई पे. तो वंस यू डन विद दैट, व्हाट डू यू डू नाउ? आपने इसी कंपास को उठाना है विद सेंटर एट एक्स. नाउ सेटिंग वही जो पहले थी, फॉर इंस्टेंस ये सेटिंग थी. विद सेंटर एट एक्स नाउ यू गोना ड्रॉ एन आर्क इन द मिडल ऑफ द एंगल. ये वाली आर्क पहली ड्रॉ हो गई. एंड देन यू पिक इट अप विद सेंटर एट वाई. डू नॉट चेंज द सेटिंग. विद सेंटर एट वाई, वही जो सेटिंग स्टार्ट में थी वही यहाँ पे, और वही सेंटर एट वाई पे आपने यूं रख के आर्क एक मिडल ऑफ द एंगल बनानी है. तो you've got two small arcs right in the middle of the angle. उनका जो point of intersection है उसको join कर दें with A. If this was
बाय द वे दिस इज हाउ वी रीड एन एंगल, इसको आपने जीरो के साथ मैच करना है इस लाइन को, ये जो एंगल लाइन बी ए आ रही है जीरो के साथ मैच करें, स्टार्ट रीडिंग द एंगल 10 20 30 डिग्रीज का एंगल आपका बी ए सी का। आपका ये जो वाई एक्स होगा, ये छोटा वाला एंगल, ये एग्जैक्टली अगर आपने कंस्ट्रक्शन ठीक किया तो इट विल बी एग्जैक्टली हाफ ऑफ द ओरिजिनल एंगल व्हिच वाज 30, so this is going to be 15. Okay, and the last part that we've got for geometrical constructions is constructing a polygon or a triangle basically. हम अभी सिर्फ एग्जांपल करेंगे of a triangle, and when the question pops up for a quadrilateral we'll do that afterwards. How do we construct a triangle? These are the two basic types of questions that will be given. Construct a triangle ABC. This is a symbol for triangle such that AB is 10. एक लेंथ है, एक और लेंथ है और एक एंगल गिवन है. How do we begin? जिस तरह घर की फाउंडेशन ले की जाती है, you start off with the foundation. AB की वैल्यू remember 10 थी. Either it will be given or you'll draw simply, you'll pick up a scale, draw a line of 10 centimeters starting from 0. Zero से zoom in हुई हुई है तो it doesn't fit with the scale. AB 10 बना ली. What was the next piece of information that we had? BC is 8 centimeters and angle ABC, the same angle, is 43 degrees. I've specifically chosen a difficult angle over here so that I'm able to tell you how it's done. अब हम क्या करेंगे, यूं imagine it's the same shape but हमने इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर दिया. तो how did we make this angle? How did we make this angle? I'll zoom into this so that you can see. आपने ये 0 डिग्री लाइन को जीरो इस ब्लैक लाइन के साथ मैच कर लिया. देन यू स्टार्ट रीडिंग अप फ्रॉम हेयर. ये 180 से स्टार्ट नहीं करनी रीडिंग स्टार्ट करनी है फ्रॉम 0 0 10 20 30 40 41 42 and exactly 43. Our line is passing exactly from 43. Now what do? We mark a point over here, a small point, और इस कंपास को हम, इस प्रोट्रैक्टर को हम उठा लेंगे. Once we picked up the protractor, we will draw the line indefinitely. This is the line. This is what it would look like. उठा लिया हमने प्रोट्रैक्टर, वी ड्रॉन द लाइन, वी एक्सटेंडेड इन इंडेफिनिटली. अब हमें नहीं पता कि सी कहाँ पे, सी कुड बी हेयर, सी कुड बी हेयर 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 हेयर. व्हाट इज द लास्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डिफाइंस वेयर सी ई? सी इज, ये हो गया, ये हो गया. वी कमिंग टू दिस लाइन बी सी इज 8 सेंटीमीटर. बी सी इज 8 सेंटीमीटर. वो कैसे होगा? आप इस तरह स्केल रखोगे ऑन योर रजिस्टर और योर नोटबुक. आपने इसको कंपास को ओपन करना है टू अ लेंथ ऑफ 0 1 2 3 4 5 6 7 8. You pick up that compass and you place it at B. यहाँ पे रखा and you draw an arc, same setting, 8 centimeters. Wherever that arc cuts the original line that you drew, that's going to be a point C. So what do you do now? Join that point C with A. आपको एक एंगल बनाना पड़ा और एक आर्क बनानी पड़ी and you're done with the triangle. Similar is the case over here, but from the fact that we're given two sides, इस बारी we've been given two sides and angle. Instead we're given three sides and no angle. We're supposed to construct an angle triangle ABC such that AB is 10, BC is 8 and AC is 9. AB 10 यहाँ given होगा, या you can simply pick up a ruler and draw this. What do you do next? आपके पास piece of information यहाँ पे था कि BC is 8 centimeters. जिससे हमने पहले एक BC की आर्क बनाई थी. We're gonna pick up that ruler and we'll the compass go place it like this. ठीक है, and open it up to a length of 8. Once we have that, यहाँ पे रखेंगे B पे और ये आर्क ड्रॉ कर देंगे. तो ये आर्क ड्रॉ की, ये आर्क गुजर गई. अब exactly we do not exactly know where point C is. It could be anywhere over here, here or here. तभी हमने सिर्फ एक आर्क ड्रॉ किया. How do we know कि अब point C कहाँ पे है? We're done with this. ये तो फाउंडेशन थी, ये अभी आर्क बनाई. अब जो थर्ड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, दैट्स AC.
आप उसके लिए क्या करोगे कि अब AC is how much 9 centimeters. You're gonna pick up the compass again with the ruler. आप उसको you're gonna open it up to a length of 9. 9 पे किस तरह, जैसे अभी थोड़ी देर पहले समझाया था स्केल के साथ. You're gonna open it up to a radius of 9. अब A पे रखे you're gonna draw an arc. This is where the arc would pass from. तो ये तो पहले पार्ट में हो गए. अब ये दूसरा बनाया. So you already had the line AB. This will tell you where the point C is. A B बना हुआ था, इसको बस ज्वाइन कर दिया दोनों एंड से एंड वी हैव आवर ट्रायंगल ABC. Then we'll quickly jump to loci. Loci में what do we have? These are the 4 subcategories of loci. We've got loci का मतलब क्या है? Loci simply means a path. So we imagine we're asked to choose a path at a certain distance from a given point. Imagine we are asked to find a path at a certain distance from a given straight line, or we are asked to find a path equidistant from 2 given points. So we can or we can find a path equidistant from 2 given intersecting straight lines. ये 4 सब कैटेगरीज हैं पाथ की. अब उसको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट डू आई मीन बाय दैट. एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, आपको कहा जाए कि फॉर इंस्टेंस ये पॉइंट है, इससे एक खास डिस्टेंस पे दूर रहो, ना करीब आना है और ना इससे दूर जाना है ज़्यादा. तो यू बीन आस्क्ड टू लेट्स से stay around this point at a distance of 6 centimeters. Yeah, if it's in real world, real life example, 6 meters. So you've been asked to rotate around a point or stay around a point 6 meters from it. Again, if you go in a straight line, let me give you an example. Here you go. आपने कहा जी ठीक है मैं इस पॉइंट से 6 सेंटीमीटर या 6 मीटर्स दूर रहूँगा. तो भाई यहाँ पे तो आप 6 मीटर्स दूर हो, लेकिन जब अगर आपने यहाँ से जर्नी शुरू किया तो दिस इज़ वेरी फार ऑफ. फिर आप करीब आ रहे हो 8 7 ऑलमोस्ट 6 से, फिर बढ़ रहा है 7 8 9 एंड 10 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो यू कैन नॉट टेक दिस पाथ. किसी वक्त आप एक के करीब हो, किसी वक्त बहुत करीब हो, कभी दूर जा रहे हो. तो दिस इज़ नॉट इट. तो व्हाट कैन यू डू? यू बेसिकली गोइंग टू टर्न अराउंड इन अ सर्कल. अब यहाँ पे भी डिस्टेंस आपका 6 मीटर होगा, यहाँ पे भी 6 मीटर होगा, यहाँ भी 6 मीटर होगा. क्यों? क्योंकि रेडियस हमेशा इक्वल होता है ट्रायंगल सर्कल का. So that the question would either look like it will call you loci is a plural of locus. I forgot to tell you that. So the question would say locus of points at a given distance from a given point, or loci, all the loci of points at a given distance from a given point. Given point क्या है? ये center. आपने इससे तमाम वो पॉइंट्स बताने हैं, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट. 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी बनते हैं इनडेफिनेट से बनेंगे, वो आप सारे ज्वाइन करोगे तो एक सर्कल बन जाएगा. व्हाट इज द सेकंड पार्ट? एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन स्ट्रेट लाइन. इमेजिन करें कि यू इंजीनियर्स आर लेइंग अ ट्रेन ट्रैक, और ये ट्रैक ले कर गए राइट साइड वाला और लेफ्ट वाला भी ले करना है. व्हाट डू यू डू? अब यू नो कि यार आई हैव टू स्टे अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द ट्रैक दैट हैज ऑलरेडी बीन लेड. यहाँ पे भी उतना डिस्टेंस होगा, यहाँ पे भी उतना डिस्टेंस होगा, वहाँ पे भी, वहाँ पे भी, वहाँ पे भी. वाई? बिकॉज द ट्रेन wheels of a train are supposed to stay away throughout the journey at a certain distance from each other. So you cannot go in over here and then move out over here. You have to, you're supposed to stay at a certain distance from the given line. If you stay at a given distance from a given straight line, ये आपकी लाइन है, इससे आपने खास दूरी पे रहना है. तो what are you doing? You're drawing a parallel line. अब पैरेलल लाइन ड्रॉ किस तरह करते हैं कि आपने कोई जितने भी आपको डिस्टेंस पे पैरेलल लाइन चाहिए, ओपन अप द कंपास टू अ सर्टेन लेंथ विद सेंटर एट, सेंटर इसको बाय द वे कहते हैं जो पिन रख रहे हैं, एट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन ड्रॉ एन आर्क. आपने ये बना दी. अब जितना भी उन्होंने आपको रेडियस कहा था, जितना भी उन्होंने कहा था कि डिस्टेंस होना चाहिए पैरेलल लाइंस का, ये उतना ही ओपन किया हुआ है. हाउ? बाय प्लेसिंग द रूलर लाइक दिस. रूलर पे आपने वो डिस्टेंस मेजर कर लिया है. बिल फर्ज उन्होंने कहा था जी 8 सेंटीमीटर. ओके, 8 सेंटीमीटर वी गॉट एन आर्क. तो ये पहली ड्रॉ कर दी. अब कहीं पे भी इस लाइन के ऊपर यू कैन प्लेस द पिन लाइक दिस विच इज कॉल्ड द सेंटर एंड ड्रॉ अनदर आर्क. वंस यू हैव 2 आर्क्स, इन आर्क्स के ऊपर टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है? जो एक जगह पे कट करे, टेंजेंट ड्रॉ कर देना, जो दोनों आर्क्स को बस हल्का सा टच करके गुजरे. तो दिस लाइन, द लाइन दैट यू जस्ट ड्रू, is going to be parallel to the original line. What do we have next?
equidistant from two given points. अच्छा, लेट मी गिव यू अ क्विक रिकैप. ये था इक्विडिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट. अब है इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स. ठीक है, टू पॉइंट्स में आपको इमेजिन करो एक ये डिफेंडर और एक ये, एंड यू टेकिंग द बॉल फ्रॉम हियर. वी वुड ऑब्वियसली वांट कि इससे भी उतना ही दूर रहूं जितना इससे है, तो एक क्लियर पाथ हो सो दैट नोबडी कैन टेक द बॉल अवे फ्रॉम मी. तो ये अब क्या पाथ चूज करोगे? इट्स गोना बी अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. वो तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस में सीखा था हमने. How do we do that? We've already discussed that. We center at this point, you're going to draw an arc above and below. Same setting, center at this point, draw an arc above and below, and join that path. ये जो आप line choose करोगे, that's going to be a perpendicular bisector of this line segment जो इनको join कर रहा है. So we got equidistant from a point, circle, equidistant from two points, perpendicular bisector. और ये equidistant from a straight line, parallel line. अब ये वन स्ट्रेट लाइन थी ना, अब इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू स्ट्रेट लाइन है. तो चार सब कैटेगरीज है, वेरी इजी. इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वन पॉइंट, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू पॉइंट, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वन लाइन वो जो पैरेलल लाइन बनी थी, और इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन जो आप कर रहे हैं. कौन सी इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन है? एक ये जा रही है और एक ये पिज्जा स्लाइस. बहुत दफ़ा हुआ होगा घर के अंदर पिज्जा आया, ऑर्डर इन हुआ है, एंड यू बीन आस्क्ड टू कट द लास्ट पीस इनटू हाफ, डिवाइडेड इक्वली अमंगस्ट योर सिबलिंग एंड यू. तो आपने क्या किया कि एक मिडल से लाइन का बनाई है. बेसिकली नॉट नोइंगली व्हाट आर यू डूइंग, you're constructing an angle bisector. एंगल बाइसेक्टर किस तरह बनाते हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. जहाँ पे जाके वो दो लाइन इंटरसेक्ट करी, कौन सी जो पीछे स्लाइस जहाँ पे एंड हो रहा है, you're going to place the center over here, draw an arc like this. Done. जब आर्क बन गई, you have 2 points x and y, remember. So we've drawn an arc like this. Let me change the color. We've drawn an arc like this with center at this point. I'll call this point x and this point is going to be y. With center at x now, I'm going to draw another arc over here in the middle of the angle. Same setting with center at y, another arc over here in the middle of the angle. एक यूं बन जाएगी और एक यूं. I'll have to change the color once again. Not showing properly. यूं और एक यूं. अब इनका जो point of intersection है उसको आप join कर दोगे with the center of the angle, the vertex, and there you have it. That's your angle bisector. ये जो लाइन जा रही है एग्जैक्टली पिक्चर्स को हाफ में कर दिया, एक पिक्चर स्लाइस में, सॉरी, हाफ में कर दी. लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड क्विकली जंप टू द पास्ट पेपर क्वेश्चंस. हियर वी गो. It's a pretty easy topic, pretty interesting. Just stay with me here. Diagram at the bottom of the page shows triangle ABC. Sorry, yeah, triangle ABC. They asked us to measure BAC. ये typical question है past papers के, and this is what the questions in your CIEs would look like. Okay. जो मेजर एंगल BAC का है, B, A और C यहाँ पे है, somewhere over here. इसको जब मेजर करना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू नो हाउ टू प्लेस दिस प्रोट्रैक्टर और D. आपने इसको इस तरह रखना है. 0 डिग्री लाइन मैचेस दिस ब्लैक लाइन, और ये जो प्लस का साइन बन रहा है बिकॉज ये लाइन और ये 90 वाली क्रॉस कर रही है, ये एग्जैक्टली यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट है, और यहाँ से रीड करना शुरू करोगे नॉट फ्रॉम 180. एंगल हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये 100, एग्जैक्टली 100 बन रहा है. ऑल्दो दिस इज नॉट एग्जैक्ट बिकॉज वी डूइंग इट ऑन अ टीवी स्क्रीन. ये 100 के आसपास ही होना चाहिए बिकॉज इट्स क्लोज टू व्हाट लुक्स लाइक राइट एंगल. To measure angle BAC, you simply measure it from here, write the angle, you've got the answer. On the diagram, construct the locus of points inside triangle ABC such that are equidistant from A and B. इससे और इससे इक्वल. अभी हमने चार कैटेगरी लोसाई की थी. जब भी दो पॉइंट से हमें बराबर दूर रहना हो, what do we do? Angle bisector, perpendicular bisector, a circle or a parallel line. दो पॉइंट से अगर दूर रहना है, वो जो डिफेंडर वाली एग्जांपल थी, perpendicular bisector. How do we do that? आपने with center at A and using a compass, आपने यहाँ पे compass place किया, ठीक है.
और उसको आपने इस तरह ओपन किया हुआ है कि यहाँ पे पेंसिल आ रही है। वुड दिस बी करेक्ट? हाफ तो कहीं यहाँ बन रहा है। नो, यू विल हैव टू एक्सटेंड इट ताकि यहाँ से हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हो, ठीक है। What do you do once you've extended it? Draw an arc above and below the line. Sorry, below and above the line. Then you pick up this compass again with center. अब इसको यहाँ पे रखा था ना, ये आपकी पेन थी, अब यहाँ पे रखना है। First you put it over here with center at point A. You drew an arc above and below. अब इसको उठा लेना है घुमा के, अब यहाँ पे रखना है। Let me erase this and explain it on the screen so that there's no ambiguity. Now with center at B, अब आपने आर्क को इतना ओपन कर लेना है कि यहाँ हाफ से ज़्यादा हो। सेंटर एट बी यू गोना ड्रॉ एन आर्क अबव एंड बिलो द लाइन। तो अब यूं और यूं आर्क्स बनेंगी, और से देखना। वील हैव एन आर्क ओवर हेयर एंड ओवर हेयर। व्हाट डू वी डू नेक्स्ट? वी प्लेस अ रूलर लाइक दिस कि वी आर एबल टू जॉइन द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ दीज टू आर्क्स। तो एक तो हो गया ये, और दूसरा हमने इसको पिक करके यहाँ पास करा दिया। The question is, why did I extend it so much? Because the question says inside the triangle. Although ये part बाहर जा रहा है, but it is important. It is very important that we construct the remaining part of it as well. अब ये, although it's outside the triangle, but this is important because we have to join these points of intersections for us to have a perpendicular bisector. ये क्यों extend किया है? Because inside the triangle कह रहा है, यहाँ तक हमने जाना है so that we in third part are able to do shading properly. We're done with this. A and B equidistant from AB and BC. जब भी दो लाइन से equidistant रहना हो and those lines are intersecting, what do? We draw an angle bisector. Angle bisector of AB and BC. ये वाली लाइन, take a look. AB and BC. इन दो लाइन से आपने equidistant रहना है, तो आप यहाँ दरमियान में से एक लाइन चूज करोगे। How are we going to come up with that line? Angle bisector. With center at B, कोई random arc radius, draw an arc like this. So we'll end up with 2 points x and y. Ab with center at x, we're going to draw an angle inside the triangle over here. With center at y, then draw another arc inside the triangle over here. So we'll end up with one arc over here, जो x से रख के बनाई थी, ठीक है। And then we'll draw another arc over here with center at y. क्या करेंगे, इस पॉइंट को पॉइंट बी से हम ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू आर्क्स को और एक्सटेंड कर देंगे यहाँ तक। क्यों? वंस अगेन इनसाइड द ट्रायंगल ABC we supposed to stay. Let me highlight that. Inside the triangle ABC. Now the question says these two loci meet at the point P. कौन से loci, कौन से दो path? We've got this line and we've got this line. These meet at the point P. आपने ये देखो, कोई एक जगह बताओ जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं। There's only one point, ये point P. Label the point P. We've done that. Label the point P on the diagram and measure CP. What is CP? CP is the distance from this point to exactly this point. You basically, you don't have to draw this. You just have to pick up a scale and start measuring it from here all the way up till here. ये कितना distance है, and write that down in centimeters because the entire question would be in centimeters. We have another question over here. This question is saying construct, the diagram shows triangle ABC. We've got a triangle ABC. Let me zoom in. Construct the perpendicular bisector of AB. Now AB is a line segment. How do you construct a perpendicular bisector? With center at A, you're going to draw an arc above and below the line. With center at B, you're going to draw an arc above and below the line. Once you're done with those two arcs, I'll quickly draw a rough estimate of what the arcs are going to look like. With center at B एक arc यूं बनेगी और एक यूं. With center at A एक arc यूं बनेगी और एक यूं.
you simply join the points of intersection of these two arcs like this. Let me fix that, and there you have it. That's your perpendicular bisector. Make sure it touches the end of the triangle. ये इस तरह नहीं होना चाहिए जिस तरह अभी आपको नजर आ रहा था. It should go all the way and touch the side of the triangle. It should go all the way. So imagine we've got this line. We should not have a distance from this line that we are supposed to construct. इसको आपने extend करके make sure it touches the triangle like this. And the arcs obviously would not be this looking like this. They will be, let me fix this, kind of like this. This is going to be from A and this one's from A as well. इस तरह होगी, ठीक है. Now it's perfect. Shade the region inside the triangle containing, let me go back to the question. Shade the region inside the triangle. इसके अंदर आपने कुछ रीजन शेड करना है. Containing points that are closer to A, इसके करीब हो, और B के नहीं, closer to A than B and more than 6 cm from C, और C से कम 6 सेंटीमीटर की ज़्यादा दूरी पे हो. तो सबसे पहले तो हमें सेकंड पार्ट करना पड़ेगा. How are we going to stay away 6 centimeters from C? और सिर्फ 6 centimeter, सिर्फ 6 centimeter. With center at C, you're going to draw an entire circle with a radius of 6 centimeters. तो ये हमारा 6 centimeter from C एक circle बन गया. The question says इस 6 centimeter से दूर रहना है तो we cannot come inside the circle. So let me shade the region that we can travel in. ये सारा, ये भी 6 सेंटीमीटर दूर है और ये भी सारा 6 सेंटीमीटर दूर है. एक पार्ट तो हमने कर लिया. I'll highlight that. We are staying more than 6 centimeter away from C. बट वो एक और बात कही थी उन्होंने कि A के करीब रहना, closer to A. तो closer to A कौन सा पार्ट है? ये वाला कि ये वाला? This part. So what we'll do is we'll erase this and only shade this part. This is going to be more than 6 centimeters from C and closer to A than to B. So that's our second question. What did we do over here? We constructed a circle, we constructed a perpendicular bisector. इस पार्ट में क्या किया था? We drew perpendicular bisector and an angle bisector और एक line measure की थी. Last but not, no, this is not the last. We still have a question more to go. The diagram shows the quadrilateral PQRS. हमारे पास ये quadrilateral है. Construct करना है SPQ. SPQ. इसका bisector. Bisect, to bisect means to cut it into equal two parts. इसका bisector हम कैसे बनाएंगे? It has already been drawn for us. So I would not erase this. With center at P, we're going to draw an arc like this. Done. और जब ये arc बना लिया हमारे पास दो points आ जाएंगे, X और Y. Let me label those over here. X और Y. अब हमने with same setting हमने ये compass उठाया था और arc बनाई. With same setting we're gonna place the compass at X and draw another arc. ये do not mess with the setting. Let it be. यहाँ से इसलिए पकड़ना है. With center at Y. ये जो आपको नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे पॉइंट मैंने लिखा हुआ है. We're gonna draw another arc over here in the middle of the angle. इसको प्लीज यहाँ नहीं ड्रॉ करना. इसको एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट मिडिल में ड्रॉ करते हैं. जो जहाँ पे बाइसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, सॉरी, उन पॉइंट्स को यूँ ज्वाइन कर दिया. लाइन को इस पॉइंट के साथ एंगल बाइसेक्टर बन गया. What was the second part? We had the perpendicular bisector of QR. QR का perpendicular bisector बनाना है. फिर किस तरह करेंगे? With center at Q and radius more than half the length of the line segment. एक arc इधर, हमेशा ऊपर नीचे नहीं होता. If the line looks like this, one arc is going to be on the left of it and one arc on the right. So we'll end up with two arcs like this. I'll draw them in a different color. We've got this and this. With same setting, pick it up from Q with center at R, draw an arc on the left and on the right. So we've got now an arc looking like this and like this. इनको जब आप join करोगे तो perpendicular bisector बन गया. The question over here states
The question over here states that we are supposed to, on the diagram, shade the region inside this quadrilateral. Quadrilateral क्या है कि 4 लाइन वाली स्पेस है, इसके अंदर 2 कंडीशंस हैं, containing the points that are closer to PQ, PQ के करीब हो, closer to PQ than PS, closer to PQ than PS and nearer to Q than to R. यहाँ बताता हूँ आपको, आपने PQ के करीब रहना है ना कि इस लाइन के, और आपने Q के करीब रहना है ना कि इस पॉइंट के। जब इससे नीचे सारा शेड करोगे ताकि आप PQ के करीब रहो तो ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट इट्स गोइंग टू लुक लाइक, ये तमाम रीजन। दूसरी कंडीशन उन्होंने कही कि भाई Q के करीब रहना, नॉट क्लोज टू R. दिस पार्ट is not valid. What you'll do is you'll simply erase this part. What is the shading that you're left with? Just this part, and that's your answer. That asks you to stay closer to PQ than to PS and nearer to Q than to R. Over here bearing type question भी आ जाता है, bearing type questions भी हम कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि सेम कंस्ट्रक्शंस तो हैं लोसाई की 4, बट you're also asked to measure the bearing or have an idea of what bearing is. Let me zoom into the question. हमारे पास ये एक ट्राइंगल है ABC, इसमें एक डायमेंशन गिवन है किलोमीटर्स में। अब वो कह रहे हैं कि द स्केच शोज द पोजिशन ऑफ 3 विलेजेस A, B और C. A जो है ड्यू ईस्ट ऑफ B. ईस्ट का मतलब होता है कि 90 डिग्री एंगल बन रहा है बिकॉज इट्स नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और यूजिंग अ रूलर एंड कंपास ओनली, सिर्फ कंपास रूलर यूज करना है टू कंप्लीट द ड्राइंग ऑफ ट्राइंगल यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर। वो कह रहा है कि यार हमने वी ड्रॉन दिस ट्राइंगल इन किलोमीटर्स, बट आपने रेप्लिकेट करनी है ये शेप सेंटीमीटर में, तो ये आपका स्केल है, आप हर किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करोगे। तो ये देखो, अगर साइड किलोमीटर्स में 9 किलोमीटर की इतनी छोटी सी है, ये सेंटीमीटर्स में इतनी बड़ी क्यों हो गई? बिकॉज यूर ड्राइंग अ स्केल ड्राइंग बना रहे हो। स्केल ड्राइंग होती है वो एग्जैक्ट नहीं होती, एग्जैक्ट साइज वो नहीं होता, जो ऑब्वियसली 9 किलोमीटर तो फिट नहीं आएंगे नोटबुक के ऊपर। तो व्हाट यू डू इज हर सेंटीमीटर 1 किलोमीटर रिप्रेजेंट करता है। तो अगर 9 किलोमीटर था तो कितने सेंटीमीटर होगा? 0 से लेके ये एग्जैक्ट 9 पे आ रहा है। तो दैट गोज टू शो हमारा ये लाइन ए बी जो उन्होंने पहले की दी हुई है, दैट्स ऑब्वियसली ड्रॉन एंड इट इज करेक्ट। व्हाट डू वी नीड टू डू नाउ? अब ए सी की लाइन बनानी है 5 किलोमीटर की, और एवरी किलोमीटर रिप्रेजेंट्स 1 सेंटीमीटर। तो 5 किलोमीटर इज गोइंग टू बी 5 सेंटीमीटर। वी गोना ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर विद सेंटर एट ए। विद सेंटर एट ए आपने यहाँ पे सेंटर रखा, 5 सेंटीमीटर तक आर्क खोल लिया। इमेजिन करो कि मैंने 5 तक ही खोल लिया, ऑल्दो इट्स नॉट पॉसिबल विद सच अ जूम। और इसको मैं साइड पे मूव कर लेता हूँ, मेजर कर लिया मैंने। तो विद सेंटर एट ए आई एम गोइंग टू ड्रॉ एन आर्क ओवर हेयर 5 सेंटीमीटर की फॉर द स्केल ड्राइंग। तो इमेजिन दैट पासेस लाइक दिस। नेक्स्ट इज सेइंग BC जो 8 किलोमीटर है, तो सिंस 1 किलोमीटर रिप्रेजेंट्स 1 सेंटीमीटर, 8 किलोमीटर कितना होगा? 8 सेंटीमीटर विद सेंटर एट B। अब आपने इसको 8 सेंटीमीटर पे खोल लिया इसी तरह स्केल पे रख के विद सेंटर एट B। इफ डू यू नॉट नो व्हाट आई मीन बाय दैट, आप स्केल यूँ रखोगे, 0 पे ये पिंच कर दोगे पेपर में, 8 सेंटीमीटर तक इसको ओपन कर लोगे, ये पेंसिल 8 पे हो। एंड व्हाट you'll do is with center at B you're going to draw an arc which cuts, you not moving obviously the center, you're going to draw an arc which cuts the previous arc like this. So you have this point now which is C. You're simply going to join the points A with C and then C or B with C, sorry, B with C. So it will kind of look like this. Okay, so there you have it. Using a ruler and compass only complete the drawing of ABC. अब इसमें एक और पार्ट आ जाता है, कह रहा है मेजर द बेयरिंग ऑफ C फ्रॉम B। C फ्रॉम B बेयरिंग किस तरह मेजर किया जाता है? आपका ये जो नॉर्थ होता है यहाँ से, अच्छा बाय द वे बेयरिंग ऑफ C फ्रॉम B है,
जो भी फ्रॉम के बाद लेटर होता है वहाँ पे आप होते हो, तो वी स्टैंडिंग ओवर हियर। आपने ये सारा एंगल यहाँ तक मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ डी। ये तो ऑलरेडी 90 है। व्हाट यू कैन डू इज कि यहाँ पे जीरो वाली लाइन को इसके साथ मैच करो। गौर से देखना है, ये ऑलरेडी 90 है, वी डू नॉट नीड टू मेजर दैट। जीरो वाली लाइन को इसके साथ मेजर करो और यहाँ से काउंट करना शुरू करो, 20, 0, 10, 20, 30। तो 30 ये हो गया, ये वाला एंगल, और 90 पहले था, 90 प्लस 30 120। ये हमारा एंगल है। दैट गिव्स यू हाउ मेनी मार्क्स, 2, सॉरी 1, और एक मार्क पहले आ गया था। लास्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन दैट वी हैवंट डन येट, constructing a polygon, maybe we did not do a quadrilateral construction. This is the last type of question that you need to do in Loci. ABCD is a field. I'll zoom in so that you can read the question as well. Here we go. ABCD is a field in the shape of a trapezium. वही उस पर हम अभी बनाना है हमने। ABC is 56. इसमें ज़रूरी क्या होता है कि एंगल B जो है दैट्स 56, इसमें एंगल A 104 है। नथिंग एल्स नीड्स टू बी कंसिडर्ड, ना एंगल A ना C और ना A। B आपका 56 है, A आपका एंगल 104 है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड ऑफ द फील्ड इज हाउ मच, 90। 90 मीटर्स एक्चुअली नोटबुक पे तो फिट नहीं आएंगे, इसलिए हमारे स्केल दे दिया गया। इफ 20 meters रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर ऑन द डायग्राम, तो 90 कितना होगा, कितने सेंटीमीटर बनाने पड़ेंगे। तो सिंपली व्हाट यू डू इज, आप यूँ लिख लोगे 1 सेंटीमीटर इज 20 मीटर्स, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख ली, ठीक है। नाउ हाउ मेनी सेंटीमीटर्स इज 90 मीटर्स, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यू विल एंड अप विद x इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। 4.5, 4.5 आपका डिस्टेंस है बिटवीन द पैरेलल साइड्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपने एंगल बी और एंगल ए बनाना है। ये रहा एंगल बी और ये रहा एंगल ए, पहले इनको बना लेते हैं। सो हियर वी गो। ये एंगल बी 56 था, प्लस का साइन इस बी को मैच करे, 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 56 पे यहाँ लाइन लगाई, यू प्लेस दैट अवे। और अब आपके जो लाइन लगी थी इसको यहाँ से ज्वाइन किया और एक्सटेंड कर दिया इनडेफिनेटली, बिकॉज यू नॉट नो कि अभी क्या लेंथ है। एंगल बी ए डी कितना होना चाहिए था, 104 का। तो आपने यहाँ से जीरो की लाइन जीरो के साथ मैच की, प्लस का साइन इस ए के साथ, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हेयर 104 तक गए, यहाँ लाइन लगाई और एक्सटेंड कर दिया। तो वी हैव आवर टू लाइंस गोइंग फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट ए बी। लास्ट जो चीज़ है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। वो कितना था अभी हमने कैलकुलेट किया था, इट शुड बी 4.5। और पैरेलल लाइन पे हमने बनाना सीखा था, हमने इसको ओपन कर लेना टू रेडियस ऑफ 4.5। विद सेंटर एट दिस पॉइंट हमने 4.5 की आर्क लगाई, ये गई। विद सेंटर एट एनी अदर पॉइंट, कोई ज़रूरी नहीं है कि एंड पॉइंट्स लेने हैं, यहाँ पे ले रख लेते हैं। वी ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ 4.5। यू गोना पिक अप द रूलर और ऐसे ड्रॉ करोगे कि सिर्फ टेंजेंट टच करे इन लाइंस को और यूँ क्रॉस कर दे। तो ये जो क्रॉस कर रही है वो पुरानी वाली ग्रीन लाइन और ये ग्रीन लाइन और ये आपके दो पॉइंट्स आ गए। तो वी गॉट ए बी सी एंड डी, दैट्स योर क्वाड्रिलैटरल। इसमें उसने कुछ कहा है to calculate? No, that's it. That is a 4-mark question just to construct a trapezium. That pretty much winds it up. If you have any other questions, reach me out on Instagram or my phone number. I'll be sharing that as well, and we can solve those questions as well. I have not been able to figure out any other question of this type of loci, which hasn't been covered over here. But if you do come across a question, do reach me out. Khuda Hafiz and take care.